Assalamualaikum guys, it's me Nada from Ajeen Gourmet, and today I'll be making a Middle Eastern dish called Lahm Bi. Since I grew up in the Middle East, this is one of my favorite foods and it tastes absolutely incredible. Basically ये एक अरबिक पिज़्ज़ा होता है और बहुत ही आसान है इसे बनाना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So here's all the ingredients that you need. 2 medium-sized tomatoes, 2 onions, 1 capsicum, उनको roughly cut कर लीजिए. 3 to 4 garlic cloves, 2 tablespoons of coriander and 2 tablespoons of parsley. And here's all the spices that we're gonna add. Salt 1 teaspoon, chili flakes 1 teaspoon, paprika 1 teaspoon, black pepper 1 teaspoon, tomato paste 2 tablespoon, olive oil 4 tablespoon, and you're gonna need beef mince 500 grams. Next you're gonna add all the ingredients into the grinder और हम इन सब को अच्छे से grind कर लेंगे. Now add all the spices and tomato paste as well, except the olive oil. We'll be adding that later. जब आपका मिक्सचर अच्छे से ग्राइंड हो गया हो और एक स्मूथ पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी आ जाए, then transfer into your bowl and add the remaining olive oil. Now mix well. Cover the mixture and rest it in the fridge for 1 hour. Till then you can make your Fatayer dough. I've already shared the recipe for Fatayer dough on my channel. I'll leave a link in my description box for you guys so you can go and check out the recipe. Now take a small piece of dough and roll it out thin. इसको बिल्कुल रोटी की तरह पतला पतला आपको बेलना है. Dust some flour if the dough gets a little sticky. आप इसे राउंड शेप भी बना सकते हैं. मैंने थोड़ा सा इसे ओवल शेप में बनाया है. Now place it on the baking sheet. अब 1 tablespoon मिक्सचर का लेके आप इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर. अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, पर हमें इसे ज़्यादा और भरना नहीं है. इसी तरह हम बाकी भी अपने laham bi रेडी कर लेंगे. Now just repeat all the steps. Take a small piece of dough, dust some flour on the surface and roll it out thin. Now take 1 or 1.5 tablespoon of the mixture and spread it out evenly.
Once you've prepared all your Lahm Bijins, bake them at 180 degrees Celsius in a preheated oven for 8 to 10 minutes. And Lahm Bijins ready! Smells amazing! Serve Lahm Bijin hot with hummus along with some french fries और बस आप इसे गरम गरम hummus के साथ enjoy करें। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। ये एजेस से बहुत ही क्रिस्पी होता है और सेंटर से उतना ही सॉफ्ट और जूसी बनता है। hummus डिपिंग सॉस होती है, उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। This recipe, you guys, is definitely worth trying, trust me. So do try out this recipe, and if you like this recipe, don't forget to give it a thumbs up. Share this recipe with your friends and family, and also press the subscribe button if you haven't subscribed to my channel yet. Also, don't forget to share your feedback in the comment section below. I'll see you soon with another amazing recipe. Until then, stay safe and stay happy. Thank you so much for watching, guys, and happy cooking!